Hello everyone, wishing you all a very happy Independence Day. Now, if we look at our story, there have been many attempts, several attempts to directly or indirectly control our economy, gain access over and control on our resources. अगर हम लास्ट डायरेक्ट अटेम्प्ट देखें तो दैट वाज ऑफ कोर्स द ब्रिटिश रूल और कैसे हमको फिर फाइट करना पड़ा फॉर आवर ओन रिसोर्सेज फॉर आवर ओन country to get you know control of, and which we are obviously celebrating today. But for many years now, I think this while this greed of these economies and power still is there, but maybe they have changed their thought that they don't want to have a physical control, but they want to have control over economy and determine everything in trade, economy, and that's how they want to control world over. और इंडिया हमेशा उनके आई वुड से लिस्ट के टॉप पे ही रहता है. तो मैं कुछ डेटा देख रहा था और समथिंग इंटरेस्टिंग विच आई कुड फाइंड आउट एंड आई थॉट ऑफ दैट आई शुड बी शेयरिंग विद यू. And fortunately, I see that our policy makers, decision makers, think tanks are already, have already identified this, and we are at least talking that we should be doing some things in this direction. तो अगर हम 1991 से अपनी जर्नी देखें, जब से हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई, इफ आई लुक एट द इम्पोर्ट्स, क्योंकि देखिए इम्पोर्ट्स में हम गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात बहुत कर रहे हैं, बट सर्विसेज की हम थोड़ा कम बात करने लगे हैं, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. सो इफ यू लुक एट टुडे, सिंस ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी इन 1991, the CAGR, or the compound annual growth rate of import of goods has been a little over 10%, but for services it is 12%. So हम services की growth rate ज़्यादा है. Of course volumes अभी भी goods के ही ज़्यादा हैं. We are importing around $680 billion of goods as compared to say close to $200 billion of services. और अगर हम इन सर्विसेज में देखें तो वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर अराउंड $20 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में, विच इज़ 10%. और बाय रैंक, सो सॉफ्टवेयर इज एट नंबर 4 in terms of services being imported into India. Now, while the numbers may not look very significant, अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस भी देखें बहुत अच्छा है. While we are exporting around $160 billion worth software and services, we are just importing $20 billion of software. But it is still significant to look into it because for two reasons. एक तो services, especially software में हमारे पास सारी capabilities हैं. What we need is probably a deeper R&D and a strong focus on developing products. Because क्या हो रहा है, हम बहुत application level पे focus कर रहे हैं. We may have unicorns which have come out of these applications, और जिनको consumers usually apps बोलते हैं. बट उनकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो फंडामेंटल कोर टेक्नोलॉजीज हैं ऑन विच दीज आर बिल्ट, दे आर स्टिल इम्पोर्टेड, बी इट इन द फॉर्म ऑफ सर्वर्स, बी इट इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस, कोड्स, जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे, और अब आज की डेट में AI, तो ये सारा हम इम्पोर्ट ही तो कर रहे हैं ना अभी. And this is what is accounting for this $20 billion worth of imports. और मुझे लगता है अभी तक अगर इसने सिर्फ 12% की ग्रोथ रेट देखी है इतने सालों, अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. बिकॉज हमारा देखिए, एक तो बहुत सारे बिजनेसेस वर्चुअलाइज हो रहे हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज ऑलरेडी ऑन द राइज, और अब AI का पेनिट्रेशन, प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो अगेन सॉफ्टवेयर विल द सर्विसेज इम्पोर्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, especially the software side, which all I think gets accumulated there. So this is something we need to look at, because this is definitely an area जिसको हम बहुत quickly शायद address कर सकते हैं, because we have all the capabilities over here. So we should be strongly focusing on that, how we can build these capabilities, indigenize them within the country, and look at how our dependence on software import can be reduced. ये बहुत important है. Second, जो इसके साथ एक और चीज़ हो रही है, although I haven't come across any such term, but I often refer to it as data deficit.
I think we are exporting a lot of data about us, our economy, than what we are importing about others and other economies. And this data is being exported through applications, through data centers, through hardware, through networks. Many, touch points are there which are eventually exporting this data about us and economy in one or the other form. So हमारा data deficit बहुत है. Now with AI we all know that future is just but data. हमारे पास data होगा तभी AI वर्क करेगा, AI मॉडल्स वर्क करेंगे. और अगर ये डेटा हमारे पास नहीं रहा और बाकी नेशंस के पास रहा तो वी आर गोइंग टू बिकम अ डिजिटल कॉलोनी. सो जो इंडिपेंडेंस हमने इतने फाइट के बाद करी है वो अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो सकती है इफ वी आर नॉट स्ट्रांगली एक्टिंग अपॉन इट right now. While from policy point of view and I think from thought process, we are already aware of it. And as a nation, we are working on it कि कैसे हम एक डिजिटल कॉलोनी ना बने. बट आई थिंक देर इज़ अ नीड कि हम इस पे स्ट्रांगली फोकस करें और इसको एक रियल नेशनल इम्पोर्टेंस का मिशन बना के चले दैट वी आर एबल टू डेवलप these software as well as the core technologies within India कि हमें ये इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही ना बने. This $20 billion I think for our software story has been there for now over 3 decades, and even today we are importing software of worth of $20 billion is definitely surprising. We have to look at it. हम कैसे अपनी सॉफ्टवेयर और ओवरऑल सर्विसेज को कैसे हम उसका इंपोर्ट कैसे हम कम कर पाएंगे. हमारे पास बहुत हम बोलते हैं हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी एवेन्यूज कम हैं, बट अगर हम मुझे लगता है इस पे फोकस करें तो वी शुड बी एबल टू create lot more jobs where our educated youth can get employed. So let's focus on this also while we are definitely focusing on manufacturing, make in India, and pushing everyone to produce hardware in India and reduce our imports on hardware and other products. I think we should also have a focus, an equal focus on how are we going to reduce our imports on software for the reasons I have outlined in this video. I hope you find it interesting and this triggers some thoughts in everyone's minds so that we collectively work on it and try to really bring or add to Atmanirbhar of India and completely de-risk ourselves from becoming a digital colony, which is a far more greater risk. That's what I had to share with you today. I wish you a great week ahead.